Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. I'm Anand Narsimhan. Ladies and gentlemen, we begin with news coming through. This country is not only hurtling towards balkanization, is not just being run by a bunch of bigoted mindseted people who are teaching their children nothing but hatred on the name of theology and religion. But this country has a sorry record of their treatment of minorities, and more information is now coming through. Our investigations editor Manoj Gupta getting us this exclusive input, and we will start with this very breaking news. Pakistan is no place for minorities. Non-Muslims, even Muslim sects have got a trouble, but this is a News18 super exclusive, CNN News18 super exclusive, where Pakistan, no land for minorities, the future totally in dark. But Pakistan will not end bigotry. Minorities are being openly, brazenly targeted in Pakistan. Girls are being, on a daily basis, abducted, forced into marriage, raped if they don't agree, and then left in the lurch or being murdered brutally, and the law is doing nothing. The courts are actually bowing down to personal law, and they have got nothing that they can say. In fact, a lot of the courts are guilty of providing cover fire to these fundamentalists, to these radicals, ladies and gentlemen. Now, the story that we get, the story that we have, the atrocities that have been committed are the stories that will actually chill your spine. We'll also get you people who have actually fled this persecution and sought refuge in Bharat. Somewhere, those who stood in opposition to the CAA 2019 amendment and those who thought that this was with some ulterior agenda should wake up and realize, why do they keep silent when the minorities in question are non-Muslims? Why is there silence? Why is there silence towards the atrocities committed by Pakistan? Let's ask these questions while we put out the story for you. The story is the insider story of a conversion factory. It's a super exclusive. The atrocities being committed against minorities that continue in Pakistan. Hindu girl has been abducted from Samaro in the Sindh province. The girl was sexually assaulted for 3 whole days. 3 whole days, these savages, they continued to torment her. A minor Hindu girl refused to convert to Islam. 3 more Hindu girls were kidnapped and then tortured, forcibly converted and married off to Muslim men. And some of them far older to these young girls. A lot of them minors, ladies and gentlemen. This is a shocking tale that we have to tell you today. It's a travesty on humanity. And how is it this being allowed? And how is it falling on the blind spot of the world? Is a big question. Listen in to one of these people who've been tormented. उतारते ले गए, उतारते हमारी बेइज्जती करवा बोले मुसलमानी थी, मुसलमानी जबरदस्ती करी, रिपीटेड राखी थी, उसे कहीं टाबरून मार हो रहा, टणी ने मार हो रहा, मुसलमानी करी मारो इंसाफ करो, मन बी के यूं सबो मार जना करियो जना के जना करियो गुरु मंगरी है, पुन्नू मंगरी है, रमेश हाँ हमारे तो पिस्टल राखे चेतला डिजाइन आके दो 3 दिन किथे राखी तने उताग में उताग कथे ये पुन्नू मंगरी है. We don't need to translate that story. You can hear it in her voice, the kind of ordeal that she's gone through. She's speaking a mix of Punjabi and Hindi or Sindhi, ladies and gentlemen, but she is very clearly detailing what they did to her, and that should not happen to any daughter. That should not happen to any woman, ladies and gentlemen, but it's happening to women on a day-to-day basis in Pakistan, especially in the Sindh province and also the southern Punjab portion of Pakistan. Now, let's try and look at what the world over has said so far. A lot of talk has been made, cognizance has been taken, has much been done against this nation that has been abusing minority rights and abusing minorities and forcibly converting them, brutalizing them ever since it came into existence 75 years ago. Religious freedom on a negative trajectory is what USCIRF has turned around and said. Then it says minorities are being subjected to attacks and threats, it says. Then further on says Hindu, Sikh and Christian
facing discrimination openly. Blasphemy laws are being used to deliberately target minorities and also to try and pressure them. Yusuf says Islamists are spreading disinformation to target minorities also. There is just absolute bigotry on display on ground. Spike in the cases of abduction, rape and forced conversion is what the USCIRF is saying. And it's all been upheld by the US State Department. Let's understand that. It's all been given a thumbs up by the US State Department. The UN has taken cognizance. The EU has taken cognizance. Minorities being targeted in Pakistan is a European Union resolution. Blasphemy laws are being used to target the vulnerable. Once again, EU resolution. Pakistan must review and abolish these laws. Again, this is the EU resolution. Then let's move forward and look at who else is saying. The South Asia Democratic Forum, SADF, is saying religious minorities face discrimination in Pakistan. They are also saying political parties are engaged in persecution and they are openly backing such radicals and fundamentalists. Lack of political will to safeguard minorities because they just don't care, ladies and gentlemen. They just don't care. So now, furthermore, the UN Commission on the Status of Women, more world bodies are taking cognizance, but what action is being taken? What sanctions are being put? Is the UNHRC pulling up Pakistan and naming it and shaming it on a world platform? Extremists carrying out attacks on minorities, says the UN Commission. Hundreds of girls abducted and forced to convert. Again, the UN Commission. Then, further on, victims have little or no hope of returning because they just don't get any support. Discrimination from the police and judiciary towards minorities. So the legal system also does not back them. And ladies and gentlemen, we are saying this and we are putting this story out just a day after what they tried to peddle in schools and colleges. The level of bigotry that was attempted to be peddled. Pakistan, no nation for minorities, is the question that we are asking. Let's look at the hard numbers. Minorities in Pakistan have been reduced to 2% in 7 decades. Over 5,000 Hindu families have fled. Hindus have fled religious persecution. Every year, over 1,000 girls, this is the official estimate, 1,000 girls are forcibly converted to Islam every year. This is the official estimate. Over 1,500 have been charged under blasphemy laws in the last 30 years. A lot of these cases are not even reported, ladies and gentlemen. 95% of the temples, the ancient heritage of this region, the civilizational heritage has been destroyed in Pakistan since 1990. Non-Sunni Muslims also facing discrimination in Pakistan. 400 Ahmadi killed since the introduction of the anti-Ahmadi laws. Look at this, Ismailis, Shia, all Sufi, all being persecuted in this country. And this is just a day after we exposed their bigotry, what they were trying to peddle to their children via the official educational system, ladies and gentlemen. This entire Kashmir narrative is all hinged on bigotry and the convoluted imaginary hopes and dreams of the Pakistani military establishment, who still haven't got over the humiliation of the 3 wars they lost to us, especially in 1971, where 90,000 of them not just laid down their guns, they kneeled down before Bharat and its might. Pakistan hounds minorities. Time for Pakistan to pay for its rights abuses is the question that we ask. Let's go straight across to our guest this evening. Every single instance, not every single instance needs to be exposed. Every single day we need to go and expose this country to the world. They should not have the temerity to even stand up and utter the word minorities and minority rights. That's how much we need to shame them. Shazia Almi, BJP national spokesperson with us. Sonam Mahajan, geopolitical observer with us. Dr. Syed Rizwan Ahmed, advocate with us. Zafar Saito, founder and central chief organizer of the Jai Sindh Freedom Movement, should be joining us from the US. Jai Ahuja, president of Nimittakam, an NGO in Jaipur that's been working tirelessly towards the rescue and rehabilitation of West Park Hindus and other minorities from that region. We will speak with him too. But first, I'm going to go across to Premchand and Chidam Sharma ji joining us from Jaipur. Premchand ji, Chidam Sharma ji, namaste. मेरा नाम आनंद है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है. नमस्ते नमस्ते आ रही. बिल्कुल, नमस्कार जी, आप मुझे बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्ते सर.
प्रेमचंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम जयपुर में हैं। पहले तो सिंध में रहते थे, हम पाकिस्तान से आए हैं। आप कब आए प्रेमचंद जी? और मैं अभी चिदम जी, हाँ बोलिए। मैं 2005 में आया था। आप 2005 में आए थे। और चिदम जी? मेरा हाथ मैं आया हूँ 2013 में आया हूँ और अपना अभी यहीं पर ही हूँ, जयपुर में हूँ और कराची सिंध से। कराची सिंध से। आप लोग वहां से क्यों आए, कैसे आए? देखिए मैं हम लोग जो आए थे वहाँ पर ऑब्वियसली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, स्पेशली हिंदूज़ के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो हैं वहाँ पर, और डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ही हाई लेवल पे है। और इवन 2013 बल्कि उससे पहले ही ये स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि इस वक्त बहुत ही पीक था। और मेरे लिए ये पहले फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरे बच्चे ही मुझे लग रहा था कि सेव नहीं रहेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ थी कि दे कैन बी कन्वर्टेड टू इस्लाम। तो उसकी फॉर देयर फ्यूचर हमने ये डिसीजन लिया था कि वी हैव टू माइग्रेट टू इंडिया। हमारे धर्म के रक्षा के लिए, इसके लिए हमें आना था वहाँ से यहाँ पर। तो मेन कॉज तो हमारा यही था। पर क्यों आपको लगा कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे? से आए थे। किस तरह की बातें की जाती थी आपके साथ? क्या स्कूल में क्या होता था, जरा बताएं, थोड़ा विस्तार से बताएं। वहाँ क्या होता था? देखिए स्कूल में तो स्कूल में मेरे बच्चों को तो कम्प्लीटली पढ़ाया जाता था, इस्लामियत वगैरह पढ़ाया जाता था। हाँ। और जो मेरे आसपास मेरे पीछे हमारे जानकारी में काफ़ी मेरे नोन्स में जो हमारे पीछे रहते थे, उनकी बच्चियों को उठाया गया था, कन्वर्ट किया गया उनको ज़बरदस्ती। तो हमें लगा कि इट इज़ अ प्रॉपर टाइम टू मूव टू इंडिया, कि हम पर वो चीज़ ना आए। क्योंकि मैं वहाँ पर बैंक में जॉब करता था, मेरे पापा वहाँ पर बहुत हाईली जॉब पर थे, हम लोग वेल नोन फिगर थे वहाँ पर कराची में हम लोग। तो वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर आ सकती थी, इसीलिए अब मुझे भी यहाँ पर थे। और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज अगर मैं हूँ और प्रेमचंद जी यहाँ पर हैं, तो वो तो उससे ज़्यादा हाईली वहाँ पर ये चीज़ें वीडियोस निकाली जाती हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये लोग कौन है जो वहाँ पर जाके बोल रहे हैं। तो आप उनको जानबूझ के तंग किया जाता है। हमारे कभी जी बोलिए, आप बोलिए। जी बताइए। नहीं आप बोलिए। अभी हमारे काफ़ी भाई हमारे यहाँ पर अभी आए हैं, जो 15 दिन हुए 20 दिन हुए हैं। वो अभी किसी भी वीडियो में आते हुए घबराते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ गलत होगा या उनके साथ गलत हुआ है। अभी 15 दिन पहले मैं उनके पास वहां पर गया था, हमने वीडियोस ली और वीडियोस को यूट्यूब पे जैसे ही अपलोड किया तो वो सीधे वहां पर जाके हिट हुई और उनके परिवार में पुलिस चली गई। पुलिस जाके उनको बिल्कुल डिस्टर्ब किया, उनको बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया। यानी कि इतनी लेवल पे अभी हरासमेंट हो गया है वहाँ पर कि हम उसको बता ही नहीं थे। कल परसों अभी एक हमारे महेश्वरी समाज के ही अपना मीरपुर खास के नज़दीक आसपास ही अपना वहाँ पर किसी को मारा गया है, मार के उसको ऐसी हालत कर दी, जख्मी और ही सीरियस, और हैदराबाद में शिफ्ट किया गया उसको। तो ये तो मामला बहुत पर क्यों मारा क्या प्रिटेक्स्ट होता है? किस ग्राउंड पर ये शुरू करते हैं इसको? चिदम जी बताइए, फिर मैं प्रेमचंद जी से बात करता हूँ। कैसे शुरू करते हैं? ये जानबूझ के टारगेट करते हैं? ये कोई ऑर्गेनाइज गैंग है? इनको कैसे सपोर्ट मिलता है? जानबूझ के टारगेट कर, देखिए इनको सबको सपोर्ट मिलता है। वहाँ की जो जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को कि भाई आप लोग इन हिंदूज को टारगेट कीजिए। ख़ास तौर पे जो अपना ये जो उनके जिनकी दुकानें होती हैं या अपना उनके वो जो बॉन्डेड लेबर है वहाँ पर, ख़ास तौर पे जो ज़मींदारों जो अगर जिनके ज़मीनें हैं जो उन पे काम करते हैं, उनकी बच्चियों को उठाइए, या उनको ऐसे जो काम करते जिनकी परचून की शॉप्स हैं, परचून की शॉप्स वालों को उनको अपना नाम चेंज करके रखना पड़ता है। या अगर नारायण है, जैसे मैं जहाँ पर एरिया में जहाँ रहता था वहाँ पर गुलशन हदीद में, वहाँ पर मेरे भाई थे, लक्ष्मण नाम था उनका, वो अपना वसीम से पहचाने जाते थे वहाँ पर। अच्छा। ताकि उनसे परचेजिंग हो, नहीं हो अदरवाइज वो उनसे कोई परचेज नहीं करता था, उनसे उधारी लेके जाते थे। अभी जो जिसको मारा गया है उससे वो बेचारा उधारी अपनी मांगने गया था कि मेरी उधारी दीजिए आप। उधारी उसको दिया नहीं तो उसको बोला कि सर मुझे पैसे दिया, उस बात पे उसको इतना मारा गया कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा।
तो आप ये कह रहे हैं अब कि क्या ये वो सोशल पैसे भी बॉयकॉट आपने करते नहीं हैं मांगे? आपके साथ, सोशल बॉयकॉट करते हैं। मैं जरा प्रेमचंद जी से जानना चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल तो मैं प्रेमचंद जी से अगर बात करूं, चिदम जी, प्रेमचंद जी आप बताइए, आप 2005 में ही आ गए, आप परिवार के साथ आए, क्यों आए? जी सर। सर वहां हम दुखी हो गए मुसलमानों से, इतने दुखी। जी आवाज बोलिए। नहीं आ रही जी बोलिए, मुझे आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। सर। हाँ सर, इतना दुखी उन्होंने हमें करा जो हम क्या बताएं आपको। अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये ब्लैकमेलर कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, बच्चियों को तंग कर रहे थे। मेरी बच्ची को भी इन्होंने तंग करा, हमारे झगड़े हुए उधर। मेरी 2 कारें थी, 2 कारें भी मेरी ये उठा के ले गए, फिर मैं पैसे दे के उनसे वापस करवाई कारें। अभी जो हालत है ना, इतने हालात खराब है अभी वहां से। सब हिंदू भाई बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अगर हम किसी को भेजते हैं ना, कोई वीडियो या क्या कोई देख लेता है मुसलमान, तो उनको तंग करते हैं और रात को उनके घरों में घुस जाते हैं, जो भी पैसे वगैरह सब लूट के ले जाते हैं। अभी एक हमारे आदमी के 15 लाख रुपए जेवर, उनके बच्चों को रुका के बंदूक की नाली पे रख के उनसे 15 लाख भी छीन ले, जेवर ये छीन लिए, सब छीन ले। और उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं दे रहे अभी इतने, और काम करते हैं ये अपने जमींदारों के पास। तो ये वहां की पुलिस कोर्ट कोई मदद नहीं करती? कोई भी पुलिस कोर्ट कोई मदद नहीं करती जब आपकी मिली बेटियों हुई को है। छेड़ा गया? नहीं परेशान किया गया? नहीं, अभी तो 2 को अभी छोड़ा, 2 को अभी मुसलमान कर दिया उन्होंने सर। 2 लड़कियों को अभी मुसलमान करके शादी कर ली उन्होंने। और अपना इतना तंग कर रहे हैं जो क्या बात है। बहुत हालात खराब है अभी, बिल्कुल बहुत हालात खराब है। हमारे भी हालात खराब थे, हम तो इधर पहुंच गए भगवान की मेहरबानी से। अभी हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं तो उनकी सहायता करें और उनको जल्द से जल्द यहाँ मंगवा लें। जवान लड़के आए वहाँ, वो किडनैप करके उनसे शादियां करते हैं जबरदस्ती, और उनसे पैसे वगैरह गहना बेने सारे लूट लेते हैं। हमारे को वीजा चाहिए वहाँ की, इधर आने की सर। हमारे आदमियों को वीजा चाहिए। इतने पैसे नहीं है उनके पास जो वो अपना खर्चा उठाकर इधर तक पहुँच सके, पासपोर्ट बना सके। मुसलमान जो उनसे काम कराते उनको पूरे पैसे देते भी नहीं है, सिर्फ बस राशन देते हैं, बस वही खाओ बस। चिदम जी आप कुछ कहना चाहते थे, और इसके बाद में बाकी हमारे पैनलिस्ट हैं वो भी आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी व्यथा सुन रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी बोलिए आप। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी ये प्रेमचंद जी ने ही मुझे अभी को बताया कि इनके ही नॉन है जो कि बहुत परेशान है। उनकी 3 बच्चियां हैं। हाँ। और बाकी भी उनके बच्चे हैं। 3 बच्चियों को सिंपली 200% थ्रेट है। उनको अगर नहीं निकाला गया वहाँ से, दे कैन बी 200% कन्वर्टेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी डिस्क्रिमिनेशन आजकल जितनी बढ़ गई है, वो मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या नहीं है। वहाँ पर इतने हालात ख़राब हैं इस वक्त, और इस वक्त तो स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जितने लोग अभी आना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो स्पीड से दुगने फोर्सली ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो अपने घर वालों को सेव करें या क्या करें, अभी करें या क्या, उनके पास कोई मतलब कि वे आउट ही नहीं है। तो ये हमारे जैसे प्रेमचंद जी बोला है कि अपील है कि कुछ ऐसा कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को, हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ से आने में कोई रास्ता हो जिसमें हम अपना आने का देखिए, एक तो आने का देखिए, एक आप आने के रास्ते की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से इस काम को कर निकल रहे हैं और इनको आप कह रहे हैं कि स्टेट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इनको भी तो सबक सिखाने की जरूरत है। मैं जरा बाकी पैनलिस्ट से बात करके मैं वापस आपकी ओर रुख करता हूं। ये वो लोग हैं कि ना आज सुधरेंगे ना 100 साल के बाद सुधरेंगे। ये हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पर रहने वाले का है, चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि इनके ये वो कुत्ते की दुम है जिनको अगर आप 200 साल भी अगर पाइप के अंदर रखेंगे ना, वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो अगर हमें हमारे वहाँ के लोगों को बचाना है, देयर इज अ सिंपल वे, टेक देम आउट। अदरवाइज वहाँ रह के दे आर नॉट सेफ। आप देखिए, लेट मी जस्ट गो अक्रॉस टू आवर अदर गेस्ट. सोनम महाजन is there, Shazia Ilmi is there, Syed Rizwan is there, and Jai Ahuja has also joined us. Namaste and Jai Hind to all of you. Shazia Ilmi, how much would it hurt a father, a relative to say कि अगर मेरी बच्चियाँ वहाँ रही तो 200% उनको वो खराब कर देंगे, उनको जबरन उनका ईमान बदल देंगे?
It's very disturbing to hear this, and I can't imagine that this goes on. इनकी भाई साहब की हमने बात सुनी और सुनकर ही इतना तकलीफ हो रही है हम सबको, मुझे लगता है। तो सोचिए जो उसको बाकायदा बर्दाश्त कर रहे हैं उनकी क्या हाल होता होगा। और रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज नहीं है। मैं पढ़ रही थी और भी चीजें, it was difficult to read, Anand, because a young girl has told a story, a young Hindu girl, and she said that actually she was forced to convert, and when she refused, she was raped repeatedly by 3 or 4 men for a few days, and nobody refused. I mean, they refused to even register an FIR where the case goes, and she went through the torture she went through. So the rapes, massacres, torture, forced conversions, they seem to be the order of the day in Pakistan as far as the minorities are concerned. And to do this to your children, to watch this happen to your daughters, is something unacceptable and will not be tolerated by anybody in India, all the brothers and sisters. And I think ये शर्मसार करती है ये हम सब के अंदर के इंसानियत इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपसे तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कमिटीज को और भारत को खासतौर से और इसीलिए जरूरत थी CAA जैसे कानून की. No, not just CA. The other aspect is, see, if there is an incident that happens in a nation which has got 1/5 of the world's population, one incident is made a headline across the world, across all the mastheads. One incident that happens which everybody collectively condemns, and the law works to get justice to the person who's here. The state is conniving. The law is against the people, minorities. The court is against the judiciary. The judiciary is against them. The police is against them. Even then, how many headlines are made about what is happening with minorities in Pakistan? Why is this nation allowed to get away? And why are we as India allowing them to get away? And it has continued to go on without anybody noticing it. Forget raising an eyebrow and doing a headline on it. When it comes to the international press, I really would like to question them. That it's really a matter of great shame, that nothing is done about it. And I find it unbearable to even listen to this, just as a human being. And the sad travesty is that because they are getting away over there, Sonam Mahajan, there are elements in our country who think they can get away with this. And as a nation, Sonam Mahajan, we have failed in trying to internationalize the sorry minority record of Pakistan and shame them on every platform that they don't dare to open their mouth on any aspect. We've not done it. Anand, the Indian state is clearly at war with the Indian people. I'm pained to see this, but this is the reality. And this is not just the order of the day, in Pakistan. Like it's not a recent phenomenon, it's always been there. The very existence of Pakistan is one big event and proof of Hindu phobia in the recent history. How did Pakistan get created? It was created based on two-nation theory, which literally means that the Hindus and the Muslims cannot exist under a common nationality as long as Islam is not the dominant religion. I mean, this is a country which was created based on separatism, based on Hindu hatred. Anybody who was expecting the Hindus to be treated as humans in Pakistan was not in his senses in the first place. I feel we as Indians and the Indian government, we continue to fail the Pakistani Hindus. In fact, the UK government, the Rishi Sunak government, they sanctioned this guy called Mia Mittu, who's said to be protected by Pakistani security forces. Yes. Who's involved in mass conversions he's running of this Hindu racket. Girls, crimes against them. The UK government has sanctioned this individual, but we haven't. Any UK-based company today cannot do any transactions with anyone who's related to Mia Mittu in any way. This man, But Sonam we Mahajan, have not just Hindus, Hindu women, Hindu girls, Hindu families. He's also desecrated temples.
He's taken over temple lands and temple properties. He's converted them into, and he's broken those shrines and he's converted them into mosques and other, this one. He's done it openly. He's doing it and he's getting sanctioned. It's a reality. It's all chronicled What in stops various us from media. sanctioning him? What stops us from sanctioning is my question. हम sanction करके क्या होगा? Hafiz Saeed is enjoying himself. He's a state No, guest I there. mean, sanction see, करा it दिया. does make a lot अभी of मक्की को difference. sanction करा दिया. What has changed? It does make a lot of difference, Anand. See, Mia Mittu is not a terrorist, okay? Even if there are companies which refuse to deal with this individual or to deal with individuals who are related to him in some way, I mean, it does act as a deterrent. But the issue is not the We got individual. nothing to lose. Sonam ji, the issue is not the individual. The issue is the mindset. This mindset is so bigoted. Syed Rizwan ji, imagine, this is what they have said. Pakistan National Council of the Arts. We put this story out over the weekend here on CNN News 18. Kashmir Solidarity Day, 5th February 2023. Which will be held on 3rd February 2023. This is what they are asking school and college children to write on. All schools, colleges of Rawalpindi, Islamabad are said to nominate their best students in the following category. And you know what the subject is, where they have to speak for 4 minutes. Jannat kisi kafir ko na mili hai aur na milegi. This is the topic in school, sir. So this is not an individual. The state itself is bigoted. Thank you so much. Jai Hind, Vande Mataram. I would like to speak in Hindi for the convenience of all the fellow guests. Please, okay sir. With you? Ji. Yeah. See, Anand, when you talk about Pakistan as a socio-religious commentator, I tell you the moot point, the genus. The genus is that Muslim जहाँ भी majority में रहेंगे, चाहे वो गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, चाहे कंट्री हो, हम माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करेंगे। ये हमारा बर्थ राइट है, हमारा डिवाइन राइट है। अब माइनॉरिटी को बेचारी को कैसे हमारे साथ एडजस्ट करना है, ये माइनॉरिटी जाने। ये हमारा हेडेक नहीं है। ना Muslims में nothing, there is nothing like you were saying radicalized people are doing this. No. Every Muslim is more or less radicalized. कुछ कम हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है. And a true Muslim can never be secular, can never be kind-hearted for the other religion. A true Muslim. Like I am a proud munafiq. I am not a true Muslim. Hence I talk about compatibility and homogeneity. अब दो चीजें हैं. अब now you take example of UAE. अगर आप यूएई में भी जाएंगे एज अ नॉन मुस्लिम, आप आई एग्री यू विल फील सेफ देयर, लेकिन द लॉ इज वेरी क्लियर. डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट योर रिलीजन ऑन योर स्लीव, डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट योर रिलीजन ऑन द रोड, लिव बाय द अरेबिक लॉज, देन यू कैन बी पीसफुल. द मोमेंट यू स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग योर रिलीजन ऑन द रोड, you will be whipped in UAE also, in Indonesia also, any modern Muslim country. Now what you are telling about Pakistan, ये हमारे देखो भाई डीएनए में है, और आप लोगों को इसका मैकेनिज्म क्रिएट करना है हाउ टू हैंडल द मुस्लिम्स in the last 1400 years, or you have seen in Kashmir also. Now tell me one thing, why are you targeting Pakistanis? Why are you not targeting Kashmiri Muslims? You are not targeting Kashmiri Muslims because you want to be politically correct. The same psyche which the Pakistani has, the same psyche the Kashmiri Muslim has. And let the population of Bengal be 60% Muslim, the same psyche a Bengali Muslim will have. So do not segregate Pakistan with Muslims. We are one and the same. All you can do is to get out from there, like Mr. Premchand said. That is the only solution. In the end he said, ये 200 साल में नहीं सुधरेंगे, मैं कहता हूं ये क़यामत तक नहीं सुधरेंगे. साफ बात. So the whole idea is get out from there. CA के रूल्स तैयार करो, अमित शाह से बोलो इन सबको बुला लें. इनकी लड़कियां पाकिस्तान में ना महफूज थी, ना होंगी, ना आने वाले 500 साल होंगी. और जहां जहां मुस्लिम की पॉपुलेशन
मेजॉरिटी में होगी, You know, Anand, वहाँ गैर मुस्लिम की लड़कियां सेफ नहीं। रिजवान जी देखिए कई सारी बातें आप बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हैं, तो मैंने आपको आपकी बात कही, पर मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हर कोई इसी तरह सोचता है। अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो इसी बात से सोचता है, इसी तरफ से सोचता है। दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप कह रहे हैं यू आर अ प्राउड मुनाफिक। आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्गुमेंट। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बहुत सारे ऐसे मॉडरेट्स हैं जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते और उनको लगता है जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। बल्कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, जो शर्मसार होते हैं सुनकर, जी, जो शर्मिंदा होते हैं सुनकर। No, Rizwan ji, the issue is a larger one, so let's just respect everybody's point of view and let's agree to disagree on Can something. you give me 20 seconds? 20 seconds. Let's agree to disagree on this fact. The fact of the matter is, Can you give me 20 seconds? there has ji. But Anand, what I'm saying is that, you know, Let Shahzad ji complete and then you can respond. Rizwan ji. रिजवान साहब देखिए, आपके अपने ख्याल हैं, लेकिन इतने ऐसे मुसलमान हैं, इतने मॉडरेट मेहनत करने वाले, जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें तकलीफ होती है सुनकर, जिनका दिल कितना नर्म है, जो इतने अच्छे इंसान हैं और वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। तो आप पूरे सब मुसलमान को नहीं ऐसे but that's what his point of view and if I can interpret that on his behalf, the fact is that it's not that he doesn't pray, he does not believe in the tenets, but the fact is anybody who has a liberal outlook or a moderate outlook is then shunned by the radicals, is shunned by the fundamentalists, and then isolated and said that these people are also disposable. These people are also disposable. We see that in Kashmir, anybody who is Hindustan Parast is disposable, whether they're whether Muslim or non-Muslim, it doesn't matter. So that's one of the ways of looking at it. Rizwan ji, Jai Ahuja has not yet spoken. Please allow me to go to him. I've run out of time, but we're going to extend this by about 2 or 3 minutes and then quickly come back to you. Jai Ahuja, the larger problem is, one, from me as an Indian citizen, a nation that tries to take potshots at us should be taken to the cleaners. Secondly, those people who are not even getting the basic dignity, they need to be given shelter in Hindustan, because as the government has very clearly said with CAA Act of 2019, that this is the landmass, this is the Bhumi, this is Hindustan, where the minorities in the neighboring countries, which are largely Islamic nations, can find refuge because this is the land of their origin. So we have to do something about that. But more importantly, once they come here, what happens? Do they get respect? Do they get justice? आनंद, बेसिकली सबसे पहले तो ना ये राइट है उनका, भारत में शेल्टर लेना राइट है, हमें समझ लेना चाहिए। 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट में और गांधी जी के दिए हुए वचन के आधार पे हर माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को भारत में आने का, भारत में रहने का और भारत में शरण लेकर जल्दी नागरिकता लेने का अधिकार ये तब से दिया हुआ है। अब जो दूसरी बात है इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान को खान अब्दुल गफ्फार खान भारत घूमने आए थे 1954 में। उन्होंने रिक्वेस्ट करके ऐड करवाया कि हमारे लाख मना करने के बाद भी आप लोगों ने एक रेडिकल माइंडसेट का एक स्टेट बना दिया धार्मिक आधार पे। हमने कहा था एथनिसिटी के आधार पे हमें पख्तूनिस्तान दीजिए, आपने नहीं दिया। अब आपने एक ऐसा राक्षस तैयार कर दिया है कि ये अपनी गंदगी अफगानिस्तान तक फैलाएगा और आने वाले वक्त में वहां के माइनॉरिटीज को भी बहुत भयानक समस्याएं आएंगी, ये मुझे दिख रहा है। उनके आग्रह पर अफगानिस्तान जोड़ा गया, ईस्ट पाकिस्तान सक्सेशन लेकर के बांग्लादेश बना, इसलिए उन लोगों को ये अधिकार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात आपने अभी की आनंद, तो उसके रूल्स नहीं बन रहे हैं। अब हमें लगता है वो डस्टबिन में डाल दिया गया है, इतना सारा हल्ला करके। अब इन लोगों का कोई भारत में धनी दोरी माई बाप कोई है नहीं इनका। 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल एक परिवार की नागरिकता करवाने में हम लोगों को लग जाते हैं। एक एक केस को परस्यू करना और एक एक केस को सिरे पे चढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। इतने सारे वचन देकर के माननीय अमित शाह जी अब उन वचनों को क्यों नहीं निभा रहे हैं? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उनके स्पोक्स पर्सन बैठी हैं, उनको जरूर अपने अंदर पार्टी में बात करनी चाहिए कि इतने सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद इन निरीह लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है। फिर भी आनंद, एक बहुत अमेजिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं जोधपुर की, जैसलमेर की, बाड़मेर की कच्ची बस्तियां पाकिस्तानी हिंदुओं की जो हमने गोद ले रखी हैं, या जो सिख परिवार बहुत बुरी हालत में फरीदाबाद रह रहे हैं, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ रखा है। कहना चाहूंगी उनकी एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उनकी बच्चियों की आंखों की चमक, उनकी निर्धनता में भी, उनकी गरीबी में भी, उनकी जो
खुली सांसें हैं, उनकी बच्चियां नहीं उठेंगी, उनके बच्चे सुरक्षित स्कूल जा रहे हैं, सुरक्षित आ रहे हैं, उनको ना मेडिकल हेल्प मिल रही है क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उनके बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, वो पॉलिटिकल हॉस्टेज है, एक जिले से एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा पाते। अरे भाई साहब, फिर भी नहीं फिर भी मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी है। जय आहूजा, मेरे पास समय कम है तो मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन उनके मुंह से शाज़िया आलमी, आई हैव हर्ड देम कि आपको हमको इज्जत नहीं मिली, नागरिकता नहीं मिली, लेकिन हम यहाँ और ज्यादा महफूज हैं, वीड रादर स्टे बैक हियर एंड सफर अ लिटिल मोर because at least we have the security and the safety for our children and that we have the freedom to practice our faith. ये उनकी तरफ से उन्होंने सामने से मुझे कहा है, और मैंने अफगानिस्तान से आए सिखों से बात किया है, या इससे पहले भी मैं जयपुर जोधपुर में जो विस्थापित हिंदू हैं उनसे मैं बात कर चुका हूं। बट द क्वेश्चन इज, सीएए रूल्स का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। There is no justice in sight for those, even though it is 31st December 2014. No, but again, see what is happening is we moved away from, because the real okay. One minute, शाज़िया जी, इस पे डिफेंस मत ढूंढिए, मैं सारे बड़े नेताओं से मिलता हूँ पर्सनली जाके। जय, अच्छा जय प्लीज yield. Yes, शाज़िया जी. Anand, you know what all transpired in the country when the CA law was made and post the enactment and it from amendment to act. And you know how, what kind of paranoia we saw on the streets of India. So this is fellow Indians. This is fellow Indians, and it's political that in fact the critics of BJP say that it is anti-Muslim. Instead of looking at it, this has nothing to do with Indian Muslims. No, but see, I'll tell you what. देखिए, a handful of people have to first. Those people who are talking about rights of Muslims, etc. in India, they first need to stand on top of their voices and shout down Pakistan and call out every single atrocity that Pakistan is committing. They go mute. They are mute today. And this government has been elected not once but twice by a majority of this country in terms of voter percentage, who expect you to deliver a particular mandate which is promised in your manifesto. So are you going to ask those who did not get the mandate, who are going to decide what you will do when you have the mandate, ma'am? So there is complete clarity when it comes to Citizens Amendment Act. There is complete clarity, and there is no way we will let down and not allow our Sikh brothers and Hindu brothers who are discriminated against on the basis of religion to come to India. Now what is happening is, I'll tell you what is happening. See, this is where I have to wind up, but this is where we get stuck. Now we are looking at what we are doing with those who have 30 सेकंड मुझे दीजिएगा बस। जी लीजिए 30 सेकंड जी, मैं बहुत ओवर हूँ। शाजिया जी एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मूल आधार पुराना 1955 का एक्ट है। उसमें बेनिफिशियरी कौन होंगे ये लिखा हुआ है, माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, और एरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का डिसाइडेड है सेक्शन 51A में। सुनिए, ना तो एरिया चेंज किया मोदी जी ने और ना बेनिफिशियरी चेंज किए, ना तो श्रीलंकन हिंदू जोड़े, ना भूटानी हिंदू रिफ्यूजी जोड़े, ना बर्मीज हिंदू जोड़े, तो ना तो एरिया बदला ना बेनिफिशियरी बदले। फिर भी आप इस नैरेटिव को बीजेपी के लोग ढंग से चैलेंज नहीं कर पाए। आपने एक शब्द भी बेनिफिशियरी में नहीं जोड़ा, ना घटाया। जब मुस्लिम देखिए, I have to pull away. No, one minute, please. The real issue is 1 minute. It's not just what we need to fix. मुझे लगता है आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। आपको मालूम है कि चाहे वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या रोजाना सड़कों पे प्रदर्शन हो, भाजपा को क्या कुछ सुनना पड़ता है इसको लेकर। और आप जो है भाजपा को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं। देखिए, one minute. Jai Ahooja and Shazia Almi, please wait. We are missing the woods for the trees, ma'am and Jai Ahooja. The fact of the matter is that if there was an act that was passed, then the rules notification should have happened, and we should not be waiting for 2 years. There should not be half measures. The other fact is how our nations around us behaving with the temerity that they are and getting away with it. Don't fall for these kind of narratives, because it only allows them to push their agenda. They try and push the victimhood onto India and blame India while they commit the atrocities. This is a classic game. And people, strategic minds should understand that, because there are lives at stake, innocent lives at stake, that are being spoilt, destroyed on a day-to-day basis. Let's hope something comes of it, and our government and our people take the right stand. We're going to take a very short break. When we come back, again, the hate attacks continue. And once again, what's on manifest?
is again these pack vandals. So it's Kashmir, Khalistan, this agenda and attacking Hindu individuals and Hindu establishments. So it's not just in Pakistan, even in Australia. Look at these Pak-backed vandals getting a free run. And why? How dare they? How are we using our clout? We'll talk about it when we come back.